transformer. Second one will be single phase, या पहले हम लोग डीसी मशीन करेंगे? डीसी मशीन डीसी मशीन दो तरह से ऑपरेट करती है, एज अ जनरेटर एंड motor, right? Then there will be three phase induction motor. Then we'll go to synchronous machine, and then last one, synchronous machine also operates as generator and motor, and sync generator only is called as alternator. Okay, so last topic we'll be having special machines. इसको आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, वर्किंग जाननी है बस सबकी। इसमें बहुत सारे स्पेशल छोटे छोटे मोटर्स आएंगे। फर्स्ट वन विल बी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, again various other motor like reluctance motor, hysteresis motor, servo motor, stepper motor, एटसेट्रा। ऐसे ऐसे बहुत सारे मोटर। क्लियर? तो किसी भी मशीन को पढ़ने के लिए जो बेसिक सीक्वेंस फॉलो होता है, फर्स्ट पॉइंट वी गो फॉर बेसिक वर्किंग, क्या काम करना है उससे, या वी कॉल इट डेफिनेशन। आफ्टर डेफिनेशन वी गो वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल जानने के बाद कंस्ट्रक्शन। आफ्टर कंस्ट्रक्शन, according to parts, there will be equivalent circuit diagram. After getting equivalent circuit diagram, we study the properties like losses and efficiency. And if it is a AC machine, there are AC quantities involved, then we'll also have phasor diagram. After that, in transformer and generators, is not in motors, in transformer and generator there is voltage regulation. And after voltage, after understanding all the properties, we calculate from where we are getting this, and we get this properties from testing. Clear? Then we will say some special cases, right? While learning any machine, this will be the sequence almost everywhere. This is the sequence how we study electrical machines. ये बात क्लियर है? तो मशीन को मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मशीन है आपका, विच इज अ स्टेप मशीन, दैट इज
ट्रांसफार्मर। मशीनें और भी होती हैं, लेकिन हम लोग केवल इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ रहे हैं जिनका रिलेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी से, जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करती हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसफार्मर। यू नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर? Yes, sir. It is a What is static device that is a step up or static step device? down, step हाँ, up or step down voltage without changing the frequency. without changing the frequency. So by definition it is a static device used for transfer electrical power from one port to other port without changing the frequency. So by definition, working of transformer is to transfer electrical power from one port to other port. Suppose we have one port here which has electrical power, say plus minus. Anyway, transformer works only on alternating current. DC पे काम नहीं करता है. You have to transfer electrical power to other port. Port are the points from where you can take electricity or you can give electricity also. तो अगर ये ट्रांसफर करना ही है तो डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दीजिए, पहुंच गया पावर. बीच में ट्रांसफार्मर लगाने का क्या जरूरत है आपको? मीनिंग सिंपल है, अगर आप डायरेक्ट वायर से कनेक्ट करेंगे तो सेम वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है. ट्रांसफार्मर से हम इधर और इधर का वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट मेंटेन कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, जो मेन सिग्निफिकेंस है क्या, वो ये है कि इन its working, voltage and current level can be changed. मैं थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मशीन जो या ट्रांसफार्मर थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर इंट्रोड्यूस करूंगा. मेन काम है क्या है कि आप वोल्टेज करंट लेवल चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये केवल ट्रांसफर ऑफ पावर वायर से भी हो जाता है. Am I clear? जी सर. Now, how many types of transformer we have? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. देखिए, जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है तो बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, किस बेस पे हम डिवाइड कर रहे हैं. सपोज एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर आके कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स. ऐसा पॉसिबल है कि बॉयज और गर्ल्स हो एक क्लासरूम में? तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक और दूसरा टीचर आता है, कहता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, सिंसियर स्टूडेंट्स एंड नॉन सिंसियर स्टूडेंट्स. ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं. ये सुनो, जी सर. डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टीज आप कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. इसमें से कुछ 5-6 मेन क्लासिफिकेशंस हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का यूज इतना ज्यादा है कि कई सारी प्रॉपर्टीज के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है. इट इज, अगर इंपॉर्टेंट लाइन लिखें स्टेटमेंट, तो ट्रांसफार्मर कैन बी classified in many ways, in which
main classifications are, कई तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन is based on construction. डिजाइन कैसा है उसका, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइंडिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर कैसा है, इसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन है. वन इज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, अदर इज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर. करेक्ट. Yes, sir. किसी किसी बुक में या डिप्लोमा की बुक में 3 टाइप्स लिखे हुए हैं, कोर टाइप, शेप एंड बेरी टाइप. If you go in detail and observe the design, berry type transformer is a shell type transformer only. Core is not continuous, but it is actually by definition it should be included in shell type. तो किसी अच्छी बुक में आपको 3 नहीं मिलेगा. We have only 2 classification, core type and shell type design. Second classification is based on voltage level. That is, वो थोड़ा बहुत आप भी जानते होंगे. If output voltage is more than input voltage, कौन सा ट्रांसफार्मर होता है वो? Step up. Step up. Step up transformer. Second one, if output voltage is less than input voltage, the transformer is Step Step down. down. transformer. If output voltage is equal to input voltage, then the transformer is Isolation. all 3 cases. It is isolation transformer. Now, next is based on power level. कुछ ट्रांसफार्मर अलग से डिजाइन किया जाता है क्योंकि उनका पावर लेवल बहुत ज्यादा होता है, जो सब स्टेशन पे लगते हैं, जो एक पूरा कॉल पावर सपोज हैंडल करना है, जिसको ट्रांसफर करना है. तो दोज बिग ट्रांसफार्मर्स आर कॉल्ड पावर ट्रांसफार्मर्स. ओके. उसके बाद आपकी कॉलोनीज में भी स्ट्रीट साइड लगा रहता है छोटा छोटा ट्रांसफार्मर, दिखने वो छोटा ही कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसको. दोज आर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. एंड उससे भी छोटे ट्रांसफार्मर जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी स्मॉल ट्रांसफार्मर. और भी तरीके हैं क्लासिफाई करने के. फोर्थ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ phases. Here we have single phase transformer and then 3-phase transformer. और भी possibilities हैं, but depending on application, we will study only single phase and 3-phase. और भी तरीके क्लासिफाई करने के. Based on number of windings. If there is only one winding in transformer, no primary secondary winding. सेम वाइंडिंग आप प्राइमरी सेकेंडरी दोनों तरफ से यूज करते हैं, तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? Auto transformer. Auto transformer. Auto So based on number transformer. windings, the Transformer. classification is, first one is auto transformer. If number of winding is 1, then we have 2 winding transformer. जो नॉर्मली हमारे पास होता है वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है.
True winding transformer. Third one is 3 winding transformer, जिसमें primary, secondary, tertiary 3 windings होते हैं, and it is also known as star delta star transformer. Winding transformer single phase में नहीं होते, केवल 3 phase में होते हैं. Next is based on electronic application. Here we have first one is impedance matching transformer. Second one is isolation transformer. Last one, last तरीका जो अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मर को क्लासिफिकेशन करने का, it is based on frequency level. The two transformers will be more complex designs are possible, but they are used in communication. In electrical machine, we'll study only two. One is power frequency transformer. What is the power frequency? 50 hertz. फिर भूल गए आप. 50 hertz. Oh, sorry. 100. Sorry, 100. 100 hertz. 50 hertz is the natural frequency. The frequency of phone current. Power frequency is 100 hertz. So based on frequency, अगर 100 hertz पे काम कर रहा है power पे, it is power frequency transformer. And other one is audio frequency transformer. There is some difference in working also and in construction and design also. So what is audio frequency? You know, you remember? Human किस frequency से किस frequency तक सुन सकते हैं? (20 hertz to 20 kilohertz is the audio frequency. पता है आपको? Power frequency transformer, they operate on the range of 100 hertz. Audio frequency transformer, they operate in the range of kilohertz. Here? जी So सर. this much is in transformer only what we have to study. Electrical machine is the most vast syllabus, most vast subject in the topics. Clear? शुरू करें. Definition हो गया. We completed the definition. What is transformer? What it does? Okay. What will be the next topic? According to the sequence, what we decided is Working principle. working Principle. principle. Now, the working principle of transformer, it works on two basic principles. You know the working principle of transformer? Yes, sir. Faraday's law of electromagnetic induction and mutual induction. First one is, if mutual induction is basic working principle of transformer, then how auto transformer is working? It has only one winding. For mutual induction, there should be two
Windings na? For mutual induction, there should be at least 2 windings. Yes, sir. Okay, so In- mutual induction is not necessary, but induction is there. Works on 2 basic principles. That is, first one is Faraday's law of electromagnetic induction, and second one is principle of magnetic circuit. So before going to transformer, we need to take these 2 topics. इस पे कमांड होना जरूरी है आपका, तभी आप ट्रांसफार्मर आसानी से समझ सकते हैं. Clear? So one by one we see the 2 basic principles. First one, Faraday's law of electromagnetic induction. फराडे के 2 लॉ हैं, आपको पता है ना? पहला लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, एक और लॉ है फराडे का, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. By saying Faraday's law, उसमें फिर clarification नहीं है which law we are talking about. Not just Faraday's law, specifically we are talking about Faraday's law for electromagnetic induction. What is Faraday's law electromagnetic induction? कह रहे हैं कि फराडे के 1500 एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे, तब जाके एक्सीडेंटली बाय बार मैग्नेट एंड कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर वो डिस्कवरी कर पाए थे. Faraday's law of electromagnetic induction, they say that it has 2 laws. First law is whenever a conductor cuts magnetic lines of force, या मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, EMF is induced in it. जब कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है. एग्जाम्पल के लिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and this is our conductor. Is this conductor cutting the magnetic lines of force? ये कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट कर रहा है क्या? नहीं सर. नहीं कर रहा है क्योंकि वो पैरेलल है. Yes, sir. अभी ये कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट कर रहा है क्या? Yes, sir. The first condition for electromagnetic induction is conductor should cut the magnetic lines of force. It should not be parallel. Parallel case में EMF induction नहीं होगा. Now, second law is about quantity of induction. We say this law states that the EMF induced is directly proportional to rate of change of flux through it. So उससे phi amount of flux pass हो रहा है. If it is constant, no EMF will be induced. If the flux is changing, the EMF will be induced, and E is proportional to d phi by dt. By applying dimensional analysis, we get the constant to be 1. So we say that E is equal to d phi dt for single conductor. For single conductor. Okay. Now, if conductor has n number of turns,
will be n d phi by dt. For n number of turns. Clear? कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नहीं. This Faraday's law, the important point is Faraday's law tells about induced EMF, the quantity of induced EMF. It doesn't tell the direction. इतना वोल्ट मिलेगा, you can say, but प्लस किधर होगा, माइनस किधर होगा, ये नहीं बताता है. So our important point is Faraday's law gives only the magnitude of induced EMF. It does not gives the direction. So from where you will get the direction? Lenz's law. Lenz law. By applying Lenz law, we get the direction. What Lenz law says? It states that EMF or current used in EMF or current induced in a conductor is always in such a direction so that it can oppose the change in magnetic flux. Yes or no? Change in magnetic flux. अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, there are only two possibilities, या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तभी चेंज कर सकते हैं ना आप. तो करंट या ईएमएफ या जो भी है, इंडक्शन हमेशा उस तरह से होता है कि अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज कर सके, या फिर फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट उस फ्लक्स को डिक्रीज करे. बेस्ड ऑन लेंस लॉ एक तरह का न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल नहीं कंसेप्चुअल है एक्चुअली. से दिस इज अ कंडक्टर, अ कॉइल, अ सर्कुलर कॉइल. 3 डायमेंशन में है तो आपको नहीं दिखेगा. आप अज्यूम कर पा रहे हैं सर्कुलर कॉइल है जिसका प्लेन इस पेपर या जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर है, और वी हैव अ बार मैग्नेट, north pole, south pole, and this magnet is moving with velocity v. The question is, find what will be the direction of induced current so that condition दिया ही हुआ है. What will be the direction of induced current as seen from
the magnet side. तो अगर आप इस साइड से देखें, तो आपको क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट देगी? मैग्नेट कॉइल की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है। जैसे मैग्नेट कॉइल की तरफ पहुंचेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड इससे निकल के कॉइल को पास कर रही है वो इंक्रीज करेगी। दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग. So by changing of due to changing of this magnetic flux, what will be the direction of induced current? आप ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? एंटी क्लॉकवाइज है क्या? यस, करेक्ट. मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, तो नॉर्थ से निकलने वाला फ्लक्स ही इसको कट कर रहा है. yes, और ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो करंट हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी कि इस बढ़ते हुए फ्लक्स को डिक्रीज कर दे. मतलब इस कॉइल से फ्लक्स अपोजिट प्रोड्यूस होना चाहिए. दैट मींस दिस फेस शुड बी नॉर्थ पोल. थोड़ा बहुत अगर आपको बचपन का याद है, क्लास 12 का, तो नॉर्थ पोल मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड साउथ पोल मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब इसी कॉइल को अगर आप इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज मिलेगा. इसलिए जहां नॉर्थ होता है वहां साउथ भी होता है. दिस फेस विल बी नॉर्थ, सो द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर? अगर मैं वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दे दूं तो करंट विल बी क्लॉकवाइज सर. Clockwise. हाँ, वो क्लॉकवाइज जाएगा. तो आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज बेस्ड ऑन concept of Lenz law. Clear? So Lenz law and Faraday's law is only this much. जो मुझे जरूरत है, उसके अलावा फिर मुझे एक और चाहिए to explain transformer properly, which is principle of magnetic circuit. In most of the machines we are using electromagnets only. हम लोग permanent magnets use नहीं करते हैं, ट्रांसफार्मर में भी नहीं, और मैक्सिमम मशीन में there are only electromagnets or coils or windings to produce magnetic field. Okay, so if we see a coil, suppose this is a coil with n number of turns. देखिए, आप अगर कंफर्टेबल है बताइएगा, अगर कुछ बेसिक जानना है तो फिर मैं वहां से भी पीछे से भी स्टार्ट कर सकता हूँ. मैं समझ रहा हूँ कि इतना आप लोग जानते हैं. We have a coil with n number of turns and we are giving current to the coil. जब कॉइल देते हैं, एक साइड में नॉर्थ, एक साइड में साउथ पोल, डिपेंडिंग ऑन वाइंडिंग का सेंस क्या है. नॉर्थ एंड साउथ इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल. magnetic field is emitted and it returns back to south pole. From inside the magnetic field is from south to north.
Outside the magnet, magnetic field is north to south. Inside the magnet, magnetic field is south to north. इतना आप लोग जानते हैं? Yes, sir. Okay. Also, we say that magnetic flux produced is proportional to number of turns. अगर आप number of turns बढ़ाएंगे, flux बढ़ेगा, magnetic field बढ़ता है. हर एक टर्न से magnetic field produce होता है और add up होकर के net magnetic field ज्यादा मिलता है आपको. And it is also proportional to current. If we increase current, then also magnetic flux increases. अगर इस चीज को देखें, तो आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, उससे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो फ्लक्स हमेशा क्लोज लूप बना रहा है. इलेक्ट्रिक सर्किट में भी ऐसा ही होता है. आप वोल्टेज या ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई करते हैं, जब सर्किट कंप्लीट होता है तब करंट फ्लो करती है. अब करंट हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करती है, ओपन होने पे नहीं करेगा, करंट जीरो हो जाएगा. तो सर्कुलेशन ऑफ करंट वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक सर्किट. सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वी कॉल इट एज मैग्नेटिक सर्किट. बेस्ड ऑन कंपैरिजन वी से दैट इट इज मैग्नेटिक सर्किट. और यहाँ पे ओम्स लॉ क्या है? I is equal to V upon R या V is equal to IR. यहाँ पे सर्कुलेटिंग क्वांटिटी फ्लक्स है. If we remove this proportionality and multiply a constant, we will get phi is equal to Ni by S. वहां पे R क्या था? रेजिस्टेंस. यहाँ पे this is called reluctance. And this N into I, here is it is called MMF. It is magnetomotive force. This phi is Flux. magnetic Magnetic flux. flux. There we have R equal to rho L upon A. It was depending on material length and cross section area from which current is flowing. S is equal to L upon mu A, where L is length of magnetic circuit, A is cross section area from which current passing. What is mu? Is called permeability of material. Okay, यहीं से एक कॉमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है. The question is, permeability in magnetic circuit is, wait, just 1 minute, is analogous to which quantity of electric circuit? Resistance, B is conductance, C is resistivity, and D is conductivity. किस पे टिक करेंगे आप? Compare the two relations. कोई बताएगा आंसर? Conductance है क्या? Conductance. Resistivity. R equal to rho L upon A, and S is equal to L upon mu A.
रेजिस्टेंस के एनालॉगस जो है वो रिलक्टेंस है। जैसा रेजिस्टेंस का बिहेवियर होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वैसा रिलक्टेंस का बिहेवियर होता है मैग्नेटिक सर्किट में। एल और ए सेम है जो वहां पे थे। क्या म्यू एनालॉगस है 1/ρ के? ये सुनो, जी जी व्हाट इज 1/ρ? What is the Conductivity. inverse of this? What is the inverse of resistivity? It is conductivity. Conductivity. It is analogous to conductivity. Clear? So if we write the analogy, the similarity between electric and magnetic circuit, we get. We have electric circuit and we have magnetic circuit. The first analogy is, here we have EMF or voltage. Unit is volt. Here we have corresponding MMF or magnetic force. Unit is ampere turns, AT. Here we have current I. Unit is ampere. The analogous quantity in magnetic circuit is magnetic flux. Phi. Unit is Weber. Depending on quantity, we can use other kilo Weber, milli Weber. Generally, milli Weber ही रहता है system. Next is resistance. Unit was ohm. Here we have reluctance. Unit is ampere turns per Weber. वेबर को शॉर्ट में फॉर्म में W भी लिखते हैं, कैपिटल स्मॉल b. Fourth, we have Ohm's law. It is V is equal to IR. Yeah, generally we write in this form only, but here we write in this form. MMF, yeah, flux phi is equal to MMF upon reluctance. Now, this is fourth only. For resistance, we have R is equal to rho L upon A. Now, here we have S is equal to L upon A. अच्छा, म्यू की वैल्यू क्या होती है? Can we write S is equal to L upon mu naught into mu R into A? इतना बेसिक आप लोग जानते होंगे ना? Yes, sir. Mu naught is permeability of free space. The value in SI system is how much? Sir, can you repeat the question? Mu naught is permeability of free space. Its value is how much? Mu naught की वैल्यू क्या होती है? 4 pi into 10 to the power minus 7. 4 pi
2 10 into to 10 to the power minus 7 unit. क्या कर रहे हैं? आगे चल के देखेंगे. It is Henry per meter. Yes, Henry per meter. And mu r is relative probability of medium. क्लियर हुआ कि नहीं? Till this point problem? No, sir. नहीं. आगे चलते हैं. तो इलेक्ट्रिक सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट में केवल सिमिलैरिटीज ही नहीं है. There are differences also. Differences between electric circuit and magnetic circuit. Now, what are the differences? First difference is electric circuit practically exists, whereas magnetic circuit is an assumption. इससे ज्यादा डिटेल आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको यही डिफाइन करना पड़ेगा. ऐसे ज्यादा डीप में मैं नहीं जा सकता. इलेक्ट्रिक प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है. करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर में करंट फ्लो करती है. वी कैन सेंस इट बाय गैल्वेनोमीटर, अमीटर. ओके. Whereas magnetic circuit is just an assumption. वहां से कोई लाइनें निकल नहीं रही हैं एक्चुअल में. आपने मैग्नेट से लाइनें निकलती हुई देखी कभी? हम मानते हैं कि लाइनें निकल रही हैं क्योंकि हम ऐसा थ्योरी एज्यूम कर पा रहे हैं. हम मैग्नेट को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि अंदर ये हो रहा होगा, नहीं तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि मैग्नेट ऐसा बिहेव क्यों करता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम है. Now, second difference, major difference is energy is required to produce current and also to maintain it. करंट को प्रोड्यूस करने के लिए और मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअस एनर्जी की जरूरत होती है. सपोज ये वेक्टर है, इसमें तो कोई करंट है नहीं, किसी भी वायर में करंट का फ्लो करेगा. किसी भी वायर में करंट का फ्लो करेगा. जब आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जब आप बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होती है. ठीक, सर्कुलेट करता है, लूप में फ्लो करती है. लेकिन जैसे ही आप बैटरी हटाते हैं करंट बंद हो जाएगी. तो करंट को प्रोड्यूस करने के लिए भी एनर्जी चाहिए और उसको मेंटेन रखने के लिए भी एनर्जी चाहिए. वेयरएज अगर आपने एक बार नॉर्थ साउथ क्रिएट कर दिया, मैग्नेट बना दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 घूमती रहेंगी. इसको मैग्नेट बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, मेंटेन रखने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है. तो फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट करंट का जो नेचर है वो फ्लक्स के जैसा है. इन मैग्नेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करंट एंड आल्सो इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट. बट energy is required only to produce magnetic flux. It is not required
to maintain the flux. फ्लक्स हम कहते हैं एक बार एस्टेब्लिश हो गया तो पड़ा रहता है, हमेशा अवेलेबल रहता है। तीसरा डिफरेंस है, लास्ट डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को आपको ऑफ करना हो, करंट के फ्लो को बंद करना हो, तो आप क्या करेंगे? सर्किट ऑफ कैसे करते हैं? स्विच से ना? आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? स्विच ओपन कर देगा। हाँ, स्विच ऑफ Yes, करना sir. मतलब बीच Switch में open इंसुलेटर कर डाल देगा। दिया, इधर कंडक्टर बीच Yes, में sir. इंसुलेटर डाल दिया, हम कहते हैं सर्किट स्विच ऑफ हो गया। स्विच में भी तो एयर इज इंसुलेटर ओनली, नॉर्मल कंडीशन एयर इज इंसुलेटर। अगर आपको मैग्नेटिक सर्किट को ऑफ करना है तो कैसे करेंगे? एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल करके साउथ पोल तक जा रहा है, तो हम कह रहे हैं दिस इज मैग्नेटिक सर्किट। आप इस मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के जा रही है उसको रोक सकते हैं क्या? इवन इफ अगर आप यहाँ वैक्यूम भी डाल देते हैं, नॉट इंसुलेटर, तो भी मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम से भी पास कर सकती है। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज electric circuit can be No. opened or switch off, but there is no such condition in magnetic circuit. वहां पर स्विच ऑफ जैसी कोई कंडीशन नहीं होती। क्लियर? तो जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक सर्किट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पास है। डिटेल में आप एएमटी में पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। इसकी रिक्वायरमेंट हमें ट्रांसफार्मर में पड़ेगी ना। अगर मैग्नेटिक सर्किट समझे हैं आप, तो एक जस्ट मुझे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाइए। Suppose there is an iron ring. Iron ring समझते हैं ना? Ring means sir. other dimensions are very small. Okay. On this ring, number of turns are installed. ऐसे कॉपर की वाइंडिंग कर दी हमने। The current flowing is 1 ampere. Number of turns हैं 1000. जो क्रॉस सेक्शन एरिया है रिंग का, A is equal to 1 centimeter square and the radius of the ring is 10 centimeter. Right? Question है, for given figure find the magnetic flux and flux density inside the iron ring. आप ट्राई करेंगे, मैं सॉल्व करूं? प्लीज रिप्लाई करिए, टाइम बचेगा हम लोग का। सर आप कर दीजिए। ठीक।
हमें पता है कॉइल एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी और साउथ से फिर वापस नॉर्थ में आएगी। मैग्नेटिक फील्ड आयरन रिंग से बाहर गया ही नहीं है, इसी लेंथ में सर्कुलेट कर रहा है। So for solution, we know that magnetic flux is how much? Ni by S. N हमें पता है, I हमें पता है, लेकिन S हमें नहीं पता है। So we go for S. S is how much? L upon mu naught into mu R into A. Iron ring mu R मैं ले रहा हूँ approximately 500. Relative permeability of iron, cast iron. मैग्नेटिक फ्लक्स जिस लूप में फ्लो कर रहा है उसका लेंथ कितना होगा? What will be the 2 pi length r. of magnetic circuit? Pi r. इसी 2 pi r में मैग्नेटिक फील्ड है ना? Yes, sir. So it is 2 pi. R is how much? 10 centimeter. 10 centimeters. 10 to the power 10 into 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि म्यू की वैल्यू SI यूनिट में है। Now mu naught is how much? 4 pi into 10 to the power minus 7. Minus Mu r is 500. Area is क्रॉस सेक्शन एरिया रिंग का कितना है? 1 centimeter square. 1 centimeter square convert into 1 into meter square much? One into 10 to the power minus 4. 10 to the power minus 4. Pi cancel. This is 2. 2 into 500 is 10 to the power 3. 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 4 is 10 to the power minus 11. Minus 11 plus 3 is how much? 10 to the power Minus 8. minus 8. ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। Minus 1 plus 8 is 10 to the power 7. Unit is Ampere turn per Weber. ampere turns per Weber. Very good. Now continuing, we have to find out the flux. Na? The flux is N is 1000, current 1 ampere, and S is 10 to the power 7. So we can say that phi is 10 to the power minus 4 Weber. Phi is 0.1 D Weber. जिस यूनिट में रिक्वायर्ड होगा उसमें आप दे सकते। एक और चीज पूछा है आपसे, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी? बाय डेफिनेशन फ्लक्स डेंसिटी इज हाउ मच? पाई अपॉन ए। Yes, sir. जिस एरिया से फ्लक्स पास है वो एरिया ए है, फ्लक्स उसमें से फाई पास करे, डेंसिटी इज फाई अपॉन ए। फाई इज 10 to the power minus 4. Area is also 10 to the power minus 4. 1 centimeter square is 10 to the power minus 4 meter square na? We will get 1. Unit is Weber per meter square. And Weber per meter square is also known as Tesla. Tesla. So this was the introduction class for a transformer, electrical machine, and the requirements for electrical machine and transformer, what basic things we need. In next class, we are actually starting our electrical machine topic. That is, we'll start from transformer. We already did definition, what is transformer, what it does, and how it works, what are the basic working principles of transformer. Next day, tomorrow, we will apply
and see how transformer uses these principles and how it produces step up and step down. So tomorrow we will start working of transformer and construction of transformer. Clear? सुगम है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, 10-15 दिन लगाते हैं ये लोग बढ़ाने में. आज की क्लास को ओवर करें. जी सर.